relationship between your input. So production function, as a manager or as a businessman, we need to know the relationship between in our input and output. So here, with the help of demand and supply analysis, we have analyzed our the demand. Getting this? On the basis of estimated demand in the market, you are supposed to supply the number of quantities in the market. Getting this? Now, to supply the number of quantities as per this demand and supply elasticity, as well as per the income elasticity, here I need to decide my output level. Now, output level means what? How many units you will produce and you will keep as available to sell into the market. Getting this? Now, to decide your output level, again you have to arrange the resources. You have to arrange the inputs. Getting this? So, which are the input parameters? On that my total output is depend. That is something about input, that is called as a input of that is called as a factor of production. So factor of production is nothing but these are the various things which are required to manufacture your product. Getting this? So first input thing is your labor, land, then your capital, and then your labor, and with the respect to this you have to add the machineries. Getting this? With the help of land, labor, capital, and machineries, you will make raw material into finished goods. Getting this? So these are the three, along with your technology. So where whatever technology, state of technology you are using, on these four parameters, your production function is depends on. So if you use this kind of resources with efficient manner, accordingly your output may be changed. Getting this? So your level of output or level of your sale, level of your production function is going to be changed. So in the last lecture, we were discussing about the production function. So production function is the relationship between your input and output. Your inputs are like land, labor, machineries. Okay, land, labor, machineries, and capital. With the help of this, you will purchase the raw material. With the help of capital, you can have a land. You can hire the factory. You can hire the labor. You can purchase the machineries on the basis of your capital required for the organization. You will start start manufacturing the. You will start to purchase the raw material. With the help of labor and machineries, you will process on the raw material and you will convert this raw material into finished goods, and this will be ready to sell into the market. That is something about your output. Getting this? So with respect to market fluctuations, with respect to market demand and supply elasticity, with respect to change in income of the person, with respect to the output level of the competitors, I will decide my output level. कितना produce करके रखूंगा. Getting this? So again, there should be the equilibrium in the market. With respect to of market equilibrium, I will decide how many units I should produce and how much is my market share. मेरा product market में कितने % लोग लेते हैं. Getting this? On that basis, you will decide your production function. So basically, production function is the relationship between inputs. Inputs means what? These are the resources which are utilized to make your manufacturing product. To manufacture your product. Now, in the last lecture, we had studied about these production function equation. Q is F of LCN, L यानी labor, C यानी capital, and N stands for land. Okay. So after that, simplest mean labor and capital is the one of the important thing, because land is you are having. So land doesn't that much. Land doesn't create that much effect because land is there, factory is there, but if labor and capital is not available, then you can't go ahead. That's why in simplest way it is written that q is f of l and c. So this we had seen in the last lecture. So cost of function, cost of production is what? It is the total cost. It is the total cost to produce a specific quantity of product और टू ऑफर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सर्विस. कुछ सर्विस देने के लिए जो कुछ कॉस्ट आती है, दैट इज समथिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ओके.
So as a manufacturer, as a supplier, as an industrialist, I need to know my cost of production. So on that cost of production, you can add your profit margin and you will decide the selling price. If you don't know exactly your cost of production at that time, how much proportion of profit you will add and what will be your selling price, you can't decide. Because deciding of a selling price is important things, because looking towards your selling price, if it is competitive selling price, that time you will capture the market, because you have to keep your selling price equal to market price. Okay, अगर मेरे कंपनी के सेलिंग प्राइस और कॉम्पिटिटर क्या वही प्रोडक्ट का प्राइस में अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा, अगर मेरी प्राइस ज्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा, माय कस्टमर विल मूव टुवर्ड्स माय कॉम्पिटिटर्स प्राइस. Okay, so I should have to capture the market share. That's why I need to have a competitive selling price. तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, मेरा प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता होनी चाहिए. So that cost of production is nothing but your total cost incurred during this manufacturing. Getting this? So which are the total cost? Which are the total cost comes there to produce the specific product? That is, first one is the raw material. So this is consists of direct and indirect cost. Direct cost means what? The cost which is directly taking part, or the activities which is directly taking part into manufacturing activity. So cost of such direct activities will be called as the direct cost. The indirect cost means what? The cost which are indirectly supporting to the manufacturing activity. Cost of such people, cost of such activities are called as indirect cost. So cost of production is nothing but it's a total cost. So total cost consists of your direct cost as well as indirect cost. So can anybody give me one example of direct cost and one example of indirect cost? Yes. Total cost of production is equal to sum of direct cost and indirect cost. So direct cost means the cost which is directly the activity which is directly taking part into that manufacturing activity. And indirect cost is the indirectly this taking part into manufacturing activity. So can anybody tell me the example of direct cost and indirect cost? Accounting students, if any. Salary and wages, the Uh, direct cost. yes, salary and the wages means what? Why it is? Because these are the persons, that is the salary and wages. These are the person who are directly working with this manufacturing. So salary will be supportive. Getting this? Salary will not comes under that, but wages comes because wages are given to the workers who are doing their work on the machinery. जो मशीनरी के ऊपर काम करेंगे उनका जो सैलरी है, जो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो वर्कर्स काम करेंगे उनकी सैलरी कहाँ पे आएगी? डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगी. और डायरेक्ट कॉस्ट, another form of direct cost, that is the raw material. Getting this? Raw material purchased for this activity, that is also direct cost. Then along with this, for example, factory electricity required to run the machinery चलाने के लिए जो कुछ मेरा electricity का bill आएगा, that is also direct cost. Okay, can you give me more examples so that let us understand whether you are getting or not? Yes, students. Can you give me now in examples of indirect cost? Chalo. Insurance. Taxes. Yes, insurance is the one of the indirect cost. Insurance of goods. Then factory manager's salary, general manager's salary, then your administrative expenses, hotel expenses. Getting this? Then rent of factory, rent of that particular unit. Getting this? Then factory electricity, factory rent, then water bill,
taxes, insurance. So these are the indirect costs. So these are the some of the supporting department, inspection department, HR department, marketing department, salary of marketing department. Getting this? So these are the person who are also working to provide the supportive service to main manufacturing units. Getting this? So this is the direct and indirect cost. So by adding direct cost which we incurred in the production activities and which are the indirect costs who are supporting to this activity. For example, I will give one more example. For example, if you produce the products at that time, some of the times we have to use nails or gum or for example papers for packaging. Getting this? So they don't show its direct existence there, but it required. So these are all are called as a indirect cost. So total cost of production is equal to your direct cost as well as indirect cost. Okay, so this is one name. Then cost of production is also called as a variable cost plus fixed cost. Okay, so direct or indirect is the one of the cost classification, and one more is the variable cost plus fixed cost. So variable किसको बोलते हैं और fixed किसको बोलते हैं? Just बोलिए accounting students और BBA students. Just tell me first, variable cost किसको बोलते हैं और fixed cost किसको बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट मीन्स जो कॉस्ट है जो फिक्स है उस उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर जो भी है For उसको example, फिक्स कॉस्ट वी कैन से salaries are fixed cost for the company. They okay, have to put correct, correct, correct. वेरिएबल कॉस्ट जो कॉस्ट चेंज होती रहती है. Yes, exactly. What is your name? श्रीनाथ. Okay. See, fixed cost means what? जो cost level of activity अभी उसने बताया कि level of activity change होने से change नहीं होती है. For example, rent. मुझे एक भी यूनिट प्रोड्यूस किया तो उतना ही रेंट देना है. अगर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो मुझे 5,000 रेंट देना ही देना है. अगर 100 यूनिट्स भी प्रोड्यूस किए तो उतना ही रेंट देना है. Means what? If I change my level of activity, that type this fixed cost cannot change. That is called as fixed. And variable cost उसने क्या बताया कि अगर हम लोग आउटपुट चेंज करते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से वो वेरी होगी. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी. जितना मशीनरी ज्यादा चलाओगी उतना ही ज्यादा बिल आएगा. अगर मैंने मशीनरी नहीं चलाई तो मशीनरी का बिल मुझे नहीं आएगा. किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. देन वाटर, ऑयल, ग्रेस. ओके, उसके बाद लेबर. अगर जीरो प्रोडक्शन किया तो लेबर को तो हम लोग सैलरी नहीं देने वाले, बिकॉज लेबर वी हैव हायर्ड ऑन डेली बेसिस. अगर आज आया आज का पेमेंट, कल नहीं बुलाया तो कल का पेमेंट मुझे नहीं देना. Getting this? So these are called as a variable cost. Variable cost are the cost which can vary as per the level of activity. मैंने प्रोडक्शन किया तभी वो मुझे देना है, अगर प्रोडक्शन नहीं किया तो मुझे नहीं देना है. उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. एंड फिक्स कॉस्ट यानी रेंट, फैक्ट्री रेंट. Fixed factory rent is fixed. Like then your insurance is fixed. Then your, for example, manager's salary is also fixed. Getting this? Then commission, some of the times which we have to advertisement expenses may be a fixed. Getting this? So these are called as a fixed cost. So cost of production is also calculated by variable cost plus fixed cost. Getting this? Now this production cost includes cost of labor, cost of raw material, then consumables, manufacturing supplies and general overhead. ये सब कुछ combine करके हम लोग total cost calculate करेंगे. अभी अगर हम लोगों को मेरा total cost पता नहीं है तो I can't decide my selling price. Selling price is the price at which I am selling my manufacturing goods into the market. तो मुझे ये competitive selling price रखने के लिए मेरे प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है वो तो मुझे पता होना चाहिए. I should have to find out cost of production. अभी देखिए, there are some of the basic terms which we have to study right now. So first is the private cost.
So private cost means what? The private costs are the costs that are incurred by the individuals and who are directly involved in the some economic, कुछ economic activity यानी selling of goods and manufacturing of goods or selling of services, that is called as economic activity. Economic activities is the activity which is done to generate the profit. जो profit कमाने के लिए हम लोग activity करते हैं उसमें कुछ मुझे cost आएगी और उसमें से ही मैं कुछ profit कमाऊंगा, उसी activity को बोलते हैं। वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते समय जो कुछ मुझे कॉस्ट आ जाएगी, getting this means what? To conduct the lectures I have to hire the lecturer, that cost of that lecturer is called as economic cost. Along with this, to conduct the lecture I have to pay electricity bill as well as internet bill, that these costs are called as the private cost. Getting this means to do or to conduct the economic activity, that particular activity, these costs are attached with this. तो अगर मुझे लेक्चर लेना है तो मुझे लेक्चरर का सैलरी देना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का देना है, उसके बाद इंटरनेट के चार्जेस देना है। लेकिन अगर मुझे सपोज आई वांटेड टू प्रोड्यूस अ वड़ा पाव, दैट टाइम प्राइवेट कॉस्ट आर डिफरेंट। प्राइवेट कॉस्ट क्या रहेगी? ऑयल के चार्जेस, देन आपके पोटैटो के चार्जेस, ऑनियन के चार्जेस, उसके बाद फ्लोर के चार्जेस, तो गैस के चार्जेस। समझ में आ रहा है? Means what? If you change the output or nature of product at that time, private cost can also change. Try to understand. Okay. So this first activity is the selling of your lectures. This is also economic activity. Second is the selling of your vada pav. That is also economic activity. But contents required are different. Okay. तो प्राइवेट कॉस्ट किसको बोलते हैं? देखिए, प्राइवेट कॉस्ट में यानी कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते समय जो कुछ कॉस्ट आ जाएंगे, those are the expenses which are attached with that activity. Particular activity में expenses attach हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। When goods and services are produced, the certain direct and indirect costs are borne by the producing agent. तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑटोमेटिकली आते हैं। जो कुछ कॉस्ट आते हैं, whether we can classify it under direct and indirect cost or variable and fixed cost. Okay. तो एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट कॉस्ट आर द फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, जिनको हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, जो एज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर आ रहा है, मेड बाय द एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर आने वाला खर्चा, उसके बाद लेबर के ऊपर आने वाला खर्चा, एंड ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच वी private cost for producers of goods, service, or any activity include cost the firm pays to purchase. So private cost may hire the labor, capital, material, other all kind of charges that comes under private cost. Understand that this private cost. So this is one of the terminology which we have to study in economics. Clear about the private cost क्या है? Generally, these are the all costs attached with the manufacturing activity. All cost of that particular product. Clear about this, Yes, students? Yes. Now next one is the social cost. अभी देखिए सोशल कॉस्ट क्या होती है। A social costs are the costs incurred by the society as a whole. The social cost is the cost which is incurred by the society as well. These are the private costs plus any cost borne by the rest of the society. For example, I'll give you one example. Suppose when any industry is coming at one area and this industry is throwing some gases or some waste water, due to which some of the or some this industry is creating some air pollution. This industry is creating some noise pollution, due to which सोसाइटी को कुछ कॉस्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी को, फॉर एग्जांपल, अगर एयर पोल्यूशन करते हैं तो मेरा घर में क्या हो जाएगा? डस्ट आ जाएगी। फॉर इन केस ऑफ शुगर इंडस्ट्री के नजदीक अगर हमारा घर है तो वो काला काला ऐसा
पत्थर आता है हमारे घर के ऊपर या हर एरिया पे, तो वो क्लीन करने के लिए वो तो मैंने खुद ने नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, बट एज अ सोसाइटी आई हैव टू सफर दिस। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग करने के लिए, मेरा घर क्लीनिंग करने के लिए जो कुछ चार्जेस लगेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सोशल कॉस्ट। ओके, सो प्राइवेट कॉस्ट प्लस एनी कॉस्ट borne by the rest of the society. सोसाइटी को ऐसा सोशल कॉस्ट, being a member of this society and being you are staying into that particular area at that time, you about social cost. Try to understand. These are the private costs plus any cost borne by the rest of the society. So social costs are higher than the private costs when firms are able to escape some of the economic cost of product. Okay, such a situation is called as a negative externalities. So these are showing some adverse effects on the societies. So being this kind of organization, for example, particular area से जाते समय हमको कुछ स्मेल आती है इंडस्ट्री स्टार्ट होने के बाद, तो we'll identify whether this is the शुगर इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या कोई केमिकल इंडस्ट्री है। उसी केमिकल इंडस्ट्री के पास से जाते समय हमको कुछ पर्टिकुलर स्मेल आता है, क्योंकि तो उन्होंने कुछ एयर पोल्यूशन किया रहेगा, नॉइज पोल्यूशन होता है या वाटर पोल्यूशन होता है या सॉइल पोल्यूशन होता है। उसकी वजह से मेरा पानी गंदा हो जाएगा, मेरी सॉइल गंदी हो जाएगी, मेरा एयर गंदा हो जाएगा या वहां पे नॉइज हो जाएगा। उसकी वजह से जो सोसाइटी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, दैट इज समथिंग अबाउट सोशल कॉस्ट। ओके, सो सोशल कॉस्ट आर हायर देन प्राइवेट कॉस्ट से भी सोशल कॉस्ट हायर होते हैं व्हेन फर्म्स आर एबल टू एस्केप सम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो इसकी वजह से हम लोगों को क्या करना है, आई हैव टू पे द प्राइवेट कॉस्ट अलोंग विद दिस। अगर मैं सोसाइटी को कुछ नुकसान पहुंचता हूँ तो उसका भी मुझे कॉस्ट एडिशन में देना है। गेटिंग दिस? So that is the example of social cost. So social cost includes your private cost. Private cost means what? All cost of production. Along with this, if I'm damaging my society, damaging my resources, creating the damages into my soil, in water, in the air, at that time you have to bear these costs as well along with your cost of production. Okay. For example, a firm releasing untreated waste into the air imposes a cost on the society in the form of, say, amendments or higher cleanly bills in respect of the third parties that is not reflected in the cost of firm. ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फर्म में नहीं आएंगे, लेकिन अदर पीपल को उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और some of the times it will be charged again on the societies as well, on the companies as well. तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये जो नुकसान पहुंचते हैं उसका भी कॉस्ट एडिशन वहां पे लगाता है। तो सोशल कॉस्ट इंक्लूड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, some extra taxes will be charged from by this society. So social cost includes both private and another external cost to the societies arising from the production और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो चार्ज करते हैं प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। दिस इज समथिंग अबाउट सोशल कॉस्ट। If a producer can avoid cost of air pollution control equipments and did the production, it imposes cost of health on environmental degradation on the other part. Okay, so this is the social cost. In if you are producing such kind of you are producing such kind of products, at that time some of the times the social cost is also attached with this production, with this specific product. Okay, अभी मैंने एग्जांपल दिया शुगर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी सोशल कॉस्ट आती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें भी आते हैं, अलॉन्ग विद सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज। तो क्या करते हैं, जो नॉइज, एयर, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल में पोल्यूशन होता है, so that is the society has to be getting this is something about social cost. Do you have any doubt with respect to the social cost?
Tell me fast, otherwise we will move towards the accounting cost. Okay. So these are the basic terminologies we need to know in economics. Next is the accounting cost. It represents anything your business has paid for. आपके बिजनेस ने जितना भी अमाउंट पेड किया रहेगा, पे किया रहेगा, एंड दिस कॉस्ट यू हैव शोन इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो कॉस्ट आपने इनकर किए हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के पर्टिकुलर सर्विस देते समय, और वो कॉस्ट जो कुछ कॉस्ट है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे टोटल रेवेन्यू से माइनस करें. Why I can deduct? Because this is the expenditure attached with the production of that unit. Okay. So, and these are the cost. You have its invoices, you have its bills, and against that you will be showing these kind of invoices and bills as expenses into your books of account. ये जो सारे बिल्स है, सारे एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस रहेंगे, वो सब कुछ हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिखा सकते हैं, तो उसको अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं. जो कॉस्ट है जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लॉस, स्किल, तो एक एम्प्लॉय छोड़ के जाने से मेरा कुछ लॉस हो गया, that I can't count in terms of money, so that is called as a non accounting cost. जो कॉस्ट है बिजनेस से रिलेटेड है, और वो सब कुछ कॉस्ट हम लोग मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और उसके मेरे पास इनवॉइसेस है, ये सारे बिल्स हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट. एंड these all accounting costs we should have to record, because on that basis we will decide the total cost of production, then we will decide the total cost of sale, and I will calculate the profit, how much I wanted to earn by subtracting your level of expenses. Now see here, if a company wants to open office in a new market, they must make investment such as new hire yani you can hire premises, you can hire the labor, you can you can purchase the computer equipment, software systems, rent and import. तो इसको जो कुछ पैसा लगने वाला है, that is the form of accounting cost. If a total amount spent on all these areas is, for example, 7 lakh, then this 7 lakh is called as the accounting cost. These are the real cost in manufacturing, marketing and delivering your product. Product sell out करते समय, product manufacture करते समय, product को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा आते हैं, दैट इज समथिंग अबाउट योर अकाउंटिंग कॉस्ट. द कॉस्ट सिंस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टिल टू द delivering product into the market, along with your all fixed cost, along with your all variable cost, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट. So these have monetary value and they are easily identified on the bookkeepers ledgers. तो ये बुक कीपर्स के लेजर्स में दिखाते हैं, उसका वैल्यूएशन में हम लोग उसका कॉस्टिंग हम लोग इजीली जान सकते हैं. So the accounting costs are generally real time costs. They are deducted from the revenue in any given accounting period. ये जो accounting cost आते हैं तो revenue से minus करके हम लोग profit calculate कर सकते हैं, because these are in terms of money, these are in terms of rupees, so that these are easily understandable. These are we can easily identify where it is mentioned. What is its cost? What is the invoice? What is the tax? So everything. So this is about accounting cost. So all accounting costs are deducted from the product, and we will calculate the revenue for a specific product. That is about accounting cost. Now see the economic cost. Just go through this slide. What is the economic cost?
Okay, so just see here. This is another terminology, that is economic cost. So economic cost is called as, it include accounting cost. Just we have seen what is meant by accounting cost. And implicit cost. Implicit cost means what? This cost may incur, but such kind of cost we should not show in our books of accounts. But this cost may arise, and this cost may have to pay by the organization. That is something about economic cost. So see, implicit cost means what? Implicit cost, we have seen that economic cost is nothing but your accounting cost plus implicit cost. लेकिन accounting cost तो हम लोगों ने देखा कि जो books of accounts में उसकी entry होती है, and they we can list, or we can record this kind of cost. Now implicit cost means what? These are the cost, those values that are not listed on the ledger, जिसका entry ledger में नहीं हुआ है, and they are assumed by the business to utilize the resource. यानी कुछ एक्टिविटी करते समय आई कैन टेक हेल्प ऑफ सम अदर माय फ्रेंड्स. यानी मेरा फॉर एग्जांपल, मेरा फॉर वन एक फ्रेंड है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है, जिसको टेक्निकल सॉफ्टवेयर के बारे में पता है. ओके, आई विल टेक हिज हेल्प टू अपडेट माय सॉफ्टवेयर, टू अपडेट माय एंटीवायरस. तो उसको मैं पेमेंट तो नहीं करूंगा, और आई विल नॉट, सम ऑफ द टाइम्स आई विल नॉट मेक हिज पेमेंट, क्योंकि मैंने भी कभी उसको हेल्प की है, इसलिए वो यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए आ रहा है. बट टू रन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, अगर मैंने उसको नहीं बुलाया होता तो मुझे किसी को पेमेंट देना पड़ता था. लेकिन इफ आई हैव टेकन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प ऑफ सम पीपल हुज कॉस्ट आई एम नॉट शोइंग, कि जिसका खर्चा मैंने नहीं पे किया है, बट whenever you are going to estimate, at that time you can add this kind of cost. जो कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी क्या है? जो कॉस्ट कंपनी को आती है, लेकिन कंपनी कांट शो दिस इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल, मेरा लेक्चर लेते समय या मुझे कुछ हेल्प करने के लिए, फॉर एग्जांपल माय फैमिली मेंबर्स आर आल्सो हेल्पिंग मी, लेकिन उनको हम लोग सैलरी तो नहीं दे रहे. Some of the family members can also help me to prepare my PPTs, to prepare my study notes. Getting this? So that kind of activities, I'm not going to pay her, or I am not going to pay him. Lekin, this is one of the activity which is a part and parcel of your this activity. लेकिन मैं किसी और से वो करना चाहता हूँ, और उसको हम लोग कुछ नहीं पेमेंट नहीं दे रहे हैं. Getting this? This is something about implicit cost. And explicit cost यानी जो आती है और उसको हम लोग दिखा भी सकते हैं. Okay, so implicit cost are the those values that are not listed in the ledger, जिसका entry ledger में नहीं होता है, and they are assumed by the business to utilize the resources. Resources utilize करते समय मैंने ध्यान में रखना चाहिए वो cost. Implicit cost are the hypothetical expenses used when making a business decision to forecast potential profit. तो पोटेंशियल प्रॉफिट या एस्टिमेशन करते समय, सेल का एस्टिमेशन करते समय, डिमांड का एस्टिमेशन करते समय, I need to consider this kind of hypothetical expenses. These are the imaginary expenses they may come. Okay. This is implicit cost. This means that economic cost include both. Implicit तो economic cost में implicit भी cost भी आती है और explicit cost भी आती है. Explicit यानी जो books of accounts में दिखा सकते हैं, और implicit cost यानी जो cost books of accounts में नहीं. Accountants use economic cost when creating financial projection. जब financial projection करते हैं तो economic cost हम लोगों को लेना है. तो इकोनॉमिक कॉस्ट बोले तो इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट. और टू डिटरमाइन द बेस्ट आउटकम, एस्टिमेशन के दौरान ये इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है. तो इकोनॉमिक कॉस्ट अलाउज अकाउंटेंट्स टू कंसीडर बोथ explicit accounting cost and hypothetical cost, that is implicit cost, for the potential of to understand the potential of my business decisions, or to take the business decisions, I need to understand the economic cost.
Clear everybody? I hope you are understanding what is the accounting cost and what is economic cost. Clear everybody? Tell me fast. Yes, sir. Yes, Or sir. you have any doubts? Let us discuss right now. अगर समझ में नहीं आया, there will be short note. और अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन रहेगा तब इसके एक मार्क्स क्वेश्चन रहेगा. These following are the exam. Following are not comes and following cost doesn't comes under implicit cost, accounting cost, economic cost. ऐसा रहेगा, एक मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा. Clear or not? Give me reply. Yes or no? Clear, sir. Yes, sir. Yes. Can we go to next slide? Yes, sir. Then next is the short run cost. Now short run cost यानी जो एक साल के लिए कुछ एक्टिविटी रहती है और ये बार बार में मुझे करनी पड़ती है एक्टिविटी. Once we have done this, once we have bear the cost, again and again I have to do this. एक बार करने से वो होता नहीं, बार बार मुझे वही कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म. मींस दैट दिस इज द कॉस्ट व्हिच इज पेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड और इट विल बी फॉर लेस देन 1 ईयर. एक ईयर के बाद ही, ईयर के पहले ही मुझे हर बार पे जो पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज समथिंग अबाउट शॉर्ट टर्म. सी the cost which has a short term implications in the production process, these are used over the shortage or range of your output. For example, payment of wages, payment of raw materials. तो मुझे बार बार पेमेंट ऑफ सैलरीज, एक बार सैलरी करने से वो एक साल तक नहीं आएगा, एक महीने का सैलरी देने के बाद तो एक साल तक नहीं आएगा. उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. so these are called as a short term cost. Means what? Again and again you have to, these are not permanent costs. Try to understand, these are not fixed costs. Getting this? Short term cost means what? As per your level of activity, as per your strength, as per your output, you have to bear this cost again and again. So in the short run period, the organization cannot change fixed factor of production. For example, capital, factory building, plant and machinery, ये तो एक बार करते हैं, साल में एक बार. या एक बार फैक्ट्री बनाने के बाद वही फैक्ट्री हम लोग 10 साल तक यूज करते हैं. बिल्डिंग एक बार बनाया तो 10 साल तक वही करते हैं. प्लांट बनाया तो 10 साल, जितना भी उसकी लाइफ रहेगी उधर तक यूज करते हैं. लेकिन एक बार मशीनरी परचेज, एक बार रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद बार बार मुझे करने की जरूरी है ना. तो ये बार बार जो खर्चे आते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट, और एक ही बार जो खर्चे आते हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं. So in case of manufacturing activity, factor of production means what? Land, labor, factory cost, your capital will be long-term cost, or it is also called as a fixed cost. और variable cost क्या है? Wages, raw material, then your electricity bill, then your insurance में भी fixed cost, क्योंकि एक साल के लिए होता है. जो एक साल के अंदर बार बार मुझे करना पड़ता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट. However, the variable costs such as raw material, employee wages, then your direct expenses are called as a short-run cost. Clear, everybody? Yes? Give me reply fast. We are spending our time. Yes. Okay, so short-run cost, you can also identify the short-run cost and long-run cost. तो अगर मेरा प्रोडक्शन एक साल के लिए रहेगा तो उसमें फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी का कॉस्ट, कैपिटल का कॉस्ट मेरा फिक्स रहेगा. दिस विल बी फिक्स फॉर 1 ईयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन वेजेस, लेबर का चार्जेस, रॉ मटेरियल के चार्जेस, उसके बाद फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगी, उसके बाद हमारा इसके चार्जेस, होटल के चार्जेस, हॉस्पिटल के चार्जेस, कैंटीन के चार्जेस हमको बार बार पेमेंट करने पड़ेंगे. अगर इफ यू टेकन द रेंट फैक्ट्री ऑन रेंट, तब रेंट भी हमको पर मंथ देना है. तो दिस इज समथिंग अबाउट शॉर्ट रन कॉस्ट. देन सी द लॉन्ग रन कॉस्ट किसको बोलते हैं.
अभी just we have seen about the short run cost. अभी long run cost देखिए. Okay, see here, long run cost यानी. In case of short run cost, I am considering a period of 1 year. एक साल के लिए we can understand that for 1 year my factory rent will be fixed. For 1 year my insurance will be fixed. For 1 year I can use this same machinery. I will continue with the same machinery. Means what? Some costs are fixed for 1 year. And some are the variable. That is the raw material cost, wages, then your electricity, water bills, canteen expenses. These are the fixed. तो शॉर्ट रन कॉस्ट में एक कॉस्ट फिक्स है, एक कॉस्ट वेरिएबल. लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट में नोबडी इज फिक्स्ड, एवरीबडी यू हैव टू चेंज. फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन में एक साल मैंने कंसिडर किया था. अब इन लॉन्ग रन में आई कैन कंसिडर ये पीरियड ऑफ 50 years, पीरियड ऑफ 10 years, पीरियड ऑफ 100 years. एट दैट टाइम नथिंग इज फिक्स्ड. मुझे मशीनरी भी हायर करना पड़ेगा. मशीनरी का अगर लाइफ टाइम 5 साल का है तो 5 साल के बाद मुझे वो खर्चा आएगा, दूसरा मशीनरी लेना पड़ेगा. मीन्स व्हाट? माय मशीनरी इज नॉट, एक कॉस्ट ऑन मशीनरी इज नॉट फिक्स, कॉस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट फिक्स, कॉस्ट ऑन लैंड इज आल्सो नॉट फिक्स, फैक्ट्री इज आल्सो नॉट फिक्स. मीन्स व्हाट? इन लॉन्ग रन देयर आर नो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कुछ भी फिक्स नहीं होता इन लॉन्ग रन. Land, labor, capital goods, and entrepreneurship all vary to reach the long run cost of producing goods or services. ये सब कुछ entrepreneurship people भी change हो जाएंगे, manager भी change हो जाएगा. Because I'm taking the period of 50 years. तो सब कुछ factors फिक्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है. Getting this, in case of long run cost, according to long run, all inputs are variable. शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या देखा था? कुछ फैक्टर्स वेरिएबल देखे थे. मींस व्हाट? वेरिएबल यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से स्पेसिफिक एक्टिविटी का कॉस्ट चेंज होता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं. फिक्स यानी वो फिक्स होते हैं. लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या होता है? कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं होता, ऑल आर वेरिएबल. हेंस द टोटल कॉस्ट. Okay, here's total cost and total variable cost. Both are variable in case of long run cost. So long run cost में total cost and total variable cost both are equal or both are variable. Both varies. Okay. Now this is something about long run cost. Then what are the economies of scale? Just read this slide. I will explain you. क्या है economies of scale? Now, see here, let us take an example of economies of scale first, and then we will see the theory. Now, economies of scale यानी क्या है? Whenever you are producing the units, at that time, for example, you have rented one building and where you have started your manufacturing activity. Getting this? Be the rent of that activity, the rent of
that plant, it consists of two types of cost. One is the fixed cost, another is variable. तो कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी सर्विस देने हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट अटैच हुए. वन इज वेरिएबल कॉस्ट, अनदर इज फिक्स कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी होती है प्रोडक्शन लेवल से, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो कॉस्ट चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट. मैंने एग्जांपल लिया है, एक बिल्डिंग लिया है रेंट पे, 5,000 रेंट जाता है, तो एक साल का कितना हो गया, 5 into 12 इक्वल टू 60,000. तो अगर लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेट अस टेक आई हैव रेंटेड दिस बिल्डिंग फॉर 1 month, तो मुझे 5,000 रेंट देना पड़ेगा. सी, if I am producing 0 unit, means I am not producing anything, at that time my rent is fixed, तो उतना ही मुझे देना है. If I am increase my level of activity, for example 10 units अगर मैंने बनाया, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 500 रुपए पर प्रोडक्ट हो गया कॉस्टिंग. अगर मैंने 100 यूनिट बनाया तो कितना हो गया, 5,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 50 रुपीज. समझ में आ रहा है. उसके बाद अगर आई हैव प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन द सेम, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 5,000. इसका मतलब fixed cost is fixed, but it changes per fixed cost per unit change as per the level of activity. अगर मैंने 0 प्रोडक्शन किया तो टोटल कॉस्ट मुझे मेरा कितना आया, 5,000 पर यूनिट. अगर मैंने एक ही प्रोडक्शन किया, एक ही यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5,000 पर यूनिट. अगर मैंने 10 प्रोडक्शन किए तो 5,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 500 पर यूनिट आया मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट. दैट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. अगर मैंने 10 की जगह पे 100 किया तो 5,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 50 रुपीज पर यूनिट. अगर मैंने 1,000 किया तो कितना हो गया, 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट इज इक्वल टू 5,000. अगर मैंने कितना किया, इफ आई हैव प्रोड्यूस 5,000 यूनिट, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 1 रुपीज पर यूनिट. अगर मैंने 10,000 किया तो 5,000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.50 पैसे. समझ में आ रहा है. मीन्स व्हाट, इसमें क्या होता है, fixed cost per unit, though it is fixed for entire year, but fixed cost per unit can change as per the production. जितना भी आपका fixed cost per unit सेम रहेगी, लेकिन जितने अमाउंट आप लोग ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल अच्छा रहेगा. हम लोगों की इकोनॉमिक ऑफ स्केल में किसका स्टडी करना है, some costs are fixed, some costs are variable, 100% variable. इसका मतलब अगर मैंने मशीनरी नहीं चलाई तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा. अगर मैंने कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, जैसे कि पहला एग्जांपल दिया था, तो द वे इन विच यू आर इंक्रीजिंग योर आउटपुट, योर इन्वेंटरी इज गोइंग टू चेंज, योर इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज आल्सो गोइंग टू चेंज. इसका मतलब कुछ एक्टिविटी में फिक्स कॉस्ट इज फिक्स फॉर सर्टेन पीरियड, बट वेरिएबल कॉस्ट वेरीज 100% विद 100% लेवल. तो इसमें मुझे क्या करना है, आई हैव टू डू द प्रोडक्शन इन सच ए वे दैट माय ओवरऑल कॉस्ट विल बी टुवर्ड्स लोअर साइड. तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. जस्ट हियर, यानी अगर कम प्रोडक्शन किया तब क्या हो जाएगा, मेरा अगर 0 प्रोडक्शन किया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 0 है, लेकिन आई हैव फिक्स्ड कॉस्ट. जैसे भी मैं फिर मेरा प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, उससे क्या हो जाएगा, मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाला है सारे के लिए, लेकिन माय वेरिएबल कॉस्ट कैन इंक्रीज टू सर्टेन एक्सटेंट. माय वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग अगेन. जितना भी ज्यादा यूनिट परचेस करूंगा, जितना भी ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उतना ज्यादा खर्चा मुझे किसके ऊपर करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर करना पड़ेगा. लेकिन रेंट इज फिक्स ना. आप एक प्रोडक्शन करो, 10 करो, 100 करो, 500 करो, 1000 करो, या 5000 करो, या 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, लेकिन रेंट तो 5,000 देना है. लेकिन रॉ मटेरियल का कैसा है, देखिए, अगर एक प्रोडक्शन बनाना है तो एक रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा. अगर दो फिनिश गुड्स बनाने हैं तो 2 रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा. अगर 100 रॉ फिनिश गुड्स बनाने हैं तो 100 रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा. मींस व्हाट, रॉ मटेरियल वेरीज एज पर योर लेवल ऑफ एक्टिविटी. तो जैसे जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे,
वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, मेरा रॉ मटेरियल का चार्जेस यानी वेरिएबल कॉस्ट चेंज, बट माय फिक्स कॉस्ट इज फिक्स, मुझे उतना ही रेंट देना है, कितना भी प्रोडक्शन करो, 0 करो या 1000 करो या 10। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू डिसाइड दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी, कितना प्रोडक्शन करने से मुझे टोटल कॉस्ट कम आ जाएगी, दैट प्रोडक्शन लेवल इज कॉल्ड एज इकोनॉमी। उससे ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, ज्यादा किया तो मुझे टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, कम किया तो भी मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ेगी टू सर्टेन एक्सटेंट। तो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट कम 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 होके जाएगी, उसके बाद एक पोजीशन पे जाएगी, प्रोडक्शन किया तो उसके बाद फिर वो बढ़ेगी। तो जो पोजीशन थ्रेशोल्ड लिमिट है, जहां पे कम है, पहले ज्यादा थी, के बाद कम होते 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 गई, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 यूनिट तक, 10 यूनिट के बाद अगर 11वां यूनिट प्रोडक्शन किया तो उसका टोटल कॉस्ट फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये पोजीशन जहां से मेरा टोटल कॉस्ट नीचे जाएगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद और ऊपर हो जाएगी, वो पीक पॉइंट को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफ सेल्स, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। सी है, अभी देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द कॉस्ट एडवांटेज अर्न्ड बाय द कंपनीज व्हेन प्रोडक्शन बिकम्स एफिशिएंट। Now companies can achieve the economies of scale by increasing the production and lowering the cost. Cost बढ़ाएंगे, सॉरी प्रोडक्शन जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कम होके जाएगी। Okay, this happens because costs are spread over the large number of goods. जो कॉस्ट आती है तो नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। The cost can be both fixed cost as well as variable cost. ये दोनों कॉस्ट आती है। Now see, try to understand this. Now, when more units of goods or service can be produced on the large scale, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, yet with an average fewer input cost, तो वहां पे इनपुट कॉस्ट फीवर कम आती है, एवरेज आती है। इकोनॉमी ऑफ स्केल आर सेड टू बी अचीव्ड। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे और कम प्राइसेस, अगर प्रोडक्शन करना पॉसिबल है नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। व्हेन एवरेज कॉस्ट स्टार्ट फॉलोइंग एंड ग्राफ दिखाऊंगा, व्हेन एवरेज starts following, the output increases and economies of scale occurs. उसका एक ग्राफ है, मैंने आपको देखा। Economies of by the firm when it increases the level of activity, यानी जितना भी we were taking the example of economies of scale. इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉस्ट, एक तो फिक्स कॉस्ट कुछ तो कंपनी को लगेगी और उसके बाद some cost, 1 minute, I have some of the fixed cost. So we were discussing about, for example, your institute is giving me 1000 rupees per lecture. If the lecture is attended by one student, at that time what is its per cost? 1000 rupees. अगर ये मेरा लेक्चर दो स्टूडेंट सुनते हैं तो उसकी कॉस्ट कंपनी या इंस्टीट्यूट कितनी, दैट इज 1 divided by 2 equal to 5000 per student. ये स्टूडेंट 50 लोग सुनते तो कितना पड़ेगा, 1000 divided by 50. Okay, it will be nothing but 20 rupees per student. समझ में आ रहे कंसेप्ट? मींस व्हाट, एज अ फर्म, एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगी, द लेक्चर शुड बी अटेंडेड बाय मैक्सिमम स्टूडेंट। तो जितना भी ज्यादा स्टूडेंट उसी लेक्चर को अटेंड करेंगे तो उतना भी वो क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी सस्ते में मिलेगा वो लेक्चर। गेटिंग दिस। सो जो
एक्टिविटी मुझे सस्ते में मिलेगी, उसके लिए जो कुछ मुझे खर्चा जो कुछ मुझे एवरेज कॉस्ट जो हो रहेगी, एवरेज टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट। ये कोई भी एक्टिविटी करते समय मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी और फिक्स कॉस्ट भी आएगी, तो उसका दोनों का एवरेज अगर हम लोग करते हैं, अगर इफ दैट एवरेज टोटल कॉस्ट इज टुवर्ड्स लोअर साइड, that time it is called as the economies of a scale. The advantage arise due to the inverse relationship between per unit fixed cost and quantity produced. Per unit fixed cost, अभी हम लोगों को दिखा per student cost, it is fixed, getting this, and quantity to be produced. The greater of output produced, the lower the प्राइस पर यूनिट कॉस्ट। जितना भी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उसका फिक्स कॉस्ट कम होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया। The economies of scale also result in a fall in the average variable cost. Economies of scale क्या करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे आती है with the increase in the output. When we increase the output, when we participate in more numbers, automatically variable cost can also increase, will also decrease. Average variable, I'm not talking about variable cost, I'm talking about average variable cost can decrease. This is the brought about the operational efficiencies and the synergies as a result of increase in the scale of production. ये क्यों आते हैं? Because you are increasing your operational efficiencies. आप लोग 60% कैपेसिटी से काम करते थे, अभी 100% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, means what? You have increased your operational efficiencies as well as in more number of units you are producing. Rather than producing in 2 units, 3 units, you can produce into 100 in your 50 units and you will enjoy the cost benefits. Economies of scales are cost reduction that occur when companies increase the production. ये cost reduction कब होती है? If we produce more, because fixed cost part is more, तो ये fixed cost का per unit contribution कम कर, because variable cost is not going to change, तो वो तो आने ही आने वाले, लेकिन where I can save money in fixed cost, in fixed cost, तो ज्यादा प्रोडक्शन करने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगी, सो टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट विल टुवर्ड्स लोअर साइड। ये मुझे इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, सो द फिक्स्ड कॉस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन आर स्प्रेड ओवर मोर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड होती है एवरेज ना मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, इसलिए मुझे इकोनॉमी ऑफ स्केल में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग ये वाला ग्राफ भी देखेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप, सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड आवर टाइम, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच। In case of any doubts related to economies of scale, वो next lecture को उसके ऊपर discussion करेंगे। If you have any doubt, you can ask me to the next lecture. Now we have finished our time, so let us stop here. Thank you so much. Thank you, sir.